Bismillah, Rahim, and Alaikum. This is Aamer Alyzaee coming with lecture 8, stream 6, and in this we will be continuing on to the strands 1, 2, and 3. So, strand 1 we have already discussed it in the previous lecture, and today we will be discussing the different lectures on operation management and leadership and human resource management. So stay tuned. In this slide we will be discussing operations management. So overall expectations क्या हैं कि demonstrate an understanding of physical inventory control, demonstrate an understanding of the role of the basic component of the marketing functions, demonstrate an understanding of financial management techniques used in a business, and explain the factor to consider when preparing employee work schedules. So specific expectations क्या हैं, inventory control है, marketing इश्यूज हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्केड्यूलिंग है. सो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपने स्टॉक कंट्रोल को देखना है कि जब वो बनेगा वो अपने फैक्ट्री के वेयर हाउस में आएगा, उसकी टैगिंग प्रॉपर तरीके से हुई, सिस्टम में एंट्री हुई यानी बिफोर डिलीवरी फर्दर टू दी मार्केट. सो परचेजिंग प्रोसीजर्स फॉलो अप हुए, उसकी फाइल्स मेंटेन्ड हैं, के प्रोसीजर्स अपनी जगह पे फॉलो हुए कि नहीं. सप्लायर्स रिलेशनशिप, तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप किस तरह है कि एडवांस पेमेंट्स नहीं हैं तो डिलीवरीज टाइम पर हैं या नहीं, जो रॉ मटेरियल है वो टाइम पर डिलीवर हुआ या नहीं. सो ऑल दीज थिंग ही हैज़ टू मैनेज स्पेसिफिकली. एंड मार्केटिंग इश्यूज, तो मार्केटिंग नीड्स को देखना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या आ रही है, किस आइटम की डिमांड ज़्यादा है, किसको पहले प्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन साइकिल विच नीड्स टू बी फॉलोड. सो सेलिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनको देखना पड़ेगा कि कहीं सेल्स तो नहीं चल रही कि बाकी मार्केट में आप सेल्स चल रही हैं और आप अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर ही हैं, तो फिर जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएगा सेल्स के डायनामिक्स को देखते हुए कि जहाँ पे यही प्रोडक्ट उसको चीप प्राइस में मिल रही है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश ट्रांजैक्शंस एंड डेली प्रोसीजर्स को देखना है, ऑपरेटिंग budgets, bookkeeping, so all these things need to be maintained on daily basis. Scheduling, job design and work arrangements and work schedules, which team will be giving rest and which team will be needed to be working as proactive with the proactive approach. We will be discussing the leadership. So overall expectation क्या है कि demonstrate an understanding of the nature and the importance of effective leadership in a business environment, demonstrate an understanding of the mechanics and processes of group dynamics, assess the role of manager in motivating employees. So leadership expectations क्या हैं, effective leadership, group dynamics and motivating employees. So effective leadership में हम देखते हैं कि leadership style, then application of diversity in the workplace, stages of group development and structure. So conflicts, अगर टीम्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हैं, वायर मैनेजमेंट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, आपकी लेबर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, सो ट्राई टू रिजॉल्व देम थ्रू HR or through the management involvement and keep the dice rolling and keep main target is to produce the products in time and then it supplies to the market. That supply chain flow need to be streamlined in a way that there shouldn't be any blockage, there shouldn't be any stoppage in between. So motivating employees, job performance, you have to put some incentives over there, employee of the month or employee of the year, and then some benefits and some bonuses, so that motivation keeps the laborers put their effort into it and put their 100% to it. So control techniques and incentives or rewards की जो मैं बात कर रहा हूँ, so that needs to be there. एंड जो मोटिवेशन करते हैं, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल देता होता हूँ टाटा और अंबानी की, कि जब ईयर एंड के ऊपर आता है तो अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं. दे इवन ऑफर फ्लैट्स एंड व्हीकल्स एंड बाइक्स टू देयर एम्प्लॉइज, सो द एम्प्लॉइज will definitely try to put their 110% for them, and that is how they are growing and that is how their business is being flourished into the whole world. Human resource management. So overall expectation is demonstrate understanding of procedures of hiring and training employees, demonstrate understanding of the laws and regulations that govern working conditions, assess local opportunities for employees that are of personal interest and that have potential for launching a career and training,
On-job trainings are also very important. So specific expectations are hiring and training, legal considerations, and career opportunities. So hiring and training in an HR, planning, recruiting, job selection process, job trainings, on-job training. So all these are related to the training section. Looking into the legal considerations, so employment laws, legal and ethical environment, health and safety, unionized and non-unionized employment, and the career opportunities. So personal skills for employment opportunities, skill required for managers, prepare necessary documentation for employment. So these are necessary things. In this slide, I'm putting up the test on forecasting techniques, one of my previous lectures, and this quiz was given to the class, so you can also attempt on this. Look at your vocabulary, look at your understanding on the forecasting techniques, and then fill it up. So the answer to this particular quiz, I will be posting it in my next lecture. With this, we come to an end to the lecture 8, and next lecture we will be starting lecture 9, the chapter 9, and that will be focusing on perfect competition and monopoly, profit maximizing, output, shutdown decisions, and productive efficiency. So stay tuned, and inshallah we will be discussing in the next lecture starting as lecture 9 stream 1. Assalamu alaikum.